the studio. So in this video you will watch me paint still life painting, as you might have read from the caption. With painting still life, we are going to talk a lot about realism, how to maintain your palette, how to check the color value and why color value is important, and how to paint good realism. I want to talk about still life painting is that still life painting is very important and it helps you to understand nature more and how the nature works. So just take example of a lemon that I'm going to paint in this video. Lemon is a natural thing, it is not a man-made thing. So just putting one lemon on the table, you can really focus on its color value, how it works. You can really know that it is not just yellow. Lemon can have burnt umber, green, yellow, white and many colors in it. Still life painting is like a really good way to understand that how nature works, and it will help you to improve. Comes the second point. I have to paint still life, but what should I paint? How should I organize? So let me show you guys in some short clips that what I did to arrange the whole scenario, and from where I took these plants and lemon and everything, how I combined it on the table, how I use the background, and let me explain you everything by showing you the video. I'm using black fabric clothes as my background, but here is a thing again, that black fabric is not really black. I use some cool light to give it a nice effect, and because of that light, the shadow and the reflection and the light, everything, that black fabric will turn to so many other colors that you will watch me paint. एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ओवर। तो ये पेंटिंग मैंने शुरू करी एक स्केच से। तो मैंने ये स्केच वाटर कलर से पेंट करा। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं स्टिल लाइफ पहली बार पेंट कर रही थी और मैं देखना चाहती थी कि कैसा लगेगा, हाउ आई हैव टू मेंटेन पोर्शंस एंड प्रोपोर्शंस एंड एवरीथिंग। तो वाटर कलर स्केच ख़त्म होने के बाद मैंने अपने पैलेट पे दो कलर लिए, रेड एंड ब्राउन। ये इसलिए लिए क्योंकि आई वांटेड टू मेक लाइक फर्स्ट basic layer that is not blocking layer, but basically I want to create shapes and find out proportions in my oil painting also. तो मैंने burnt umber और red color इसलिए लिया because these are like kind of dark color and very earthy and have like dark value. इस टाइम ये पेंट करते हुए देखेंगे कि जार कहाँ पे है, कैंडल फ्लास्क कहाँ पे है, लीव्स कहाँ पे हैं, everything. So I'm just painting everything, and then I decided to add blue color in it because I wanted to paint like background also, the curtain that was serving as our background in the painting. So I decided to paint them like grayish black color directly in the first layer. ये जो फर्स्ट स्टेप हमारा पेंटिंग का ख़त्म हुआ, where we are like making skeleton of the painting and like shape and mapping out everything, कौन सी चीज़ कहाँ पे है. It's like kind of drawing, and you can आप इसको फ्री हैंड भी कर सकते हो डायरेक्ट कलर से, बट for still life I decided to do with brown color because I'm painting this first time. इस stage के बाद I started to set my palette. I use basic palette for oil painting. Here I set up my palette again, and the colors I'm using is phthalo blue. You can use instead of phthalo blue ultramarine blue, and this is burnt sienna. I added burnt sienna because my burnt umber is getting finished, so burnt sienna can help me at some places, and in the same way I can use burnt umber also, but in less amount. But it's okay if you don't have burnt sienna, you can just add burnt umber because from burnt umber you can actually create burnt sienna. So yes, and then I took Winsor red, and this is titanium white, and this is also titanium white, and this is Indian yellow. So I'm using all these colors, just simple basic palette, using Elgit resin medium and turpentine and gamsol as my medium and solvent to mix with my oil paint. So यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट लेयर स्टार्ट करी जहाँ पे मैं बेसिक वैल्यू प्लेस कर रही हूँ अपने वुड पैनल के ऊपर. तो इस लेयर में आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप पेंट कर रहे हैं उसकी कलर वैल्यू एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई शेप थोड़ी सी ख़राब भी हो रही है तो इस लेयर में
आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए। इस लेयर में आप फोकस करिए कि आपकी कलर वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं। डोंट ट्राई टू मेक वेरी थिन एंड डिटेल लाइंस इन दिस लेयर। आप इस लेयर में सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप कलर वैल्यू से पैलेट से आप कलर ले रहे हो और आप उसको वुड पैनल पे प्लेस कर रहे हो, जोन सा कलर जहाँ जाना है। तो एक्चुअली ये ऐसे वर्क करता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लेमन पेंट कर रही हूँ, तो मुझे ये नहीं सोचना कि मैं लेमन पेंट कर रही हूँ। मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो लेमन में कहाँ पे ब्राउन कलर है, कहाँ पे येलो कलर है और कहाँ पे वाइट कलर है। मुझे अपने दिमाग से भूल जाना है 5 मिनट के लिए कि हाँ, आई एम पेंटिंग लेमन। नो, आई एम नॉट पेंटिंग लेमन, आई एम जस्ट पुटिंग कलर वैल्यूज़ ऑन माई वुड पैनल। जी हाँ, आप जब भी रियलिज़म पेंट कर रहे हो, रियलिज़म का ये बेसिक की है कि यू आर नॉट पेंटिंग समथिंग, यू आर नॉट पेंटिंग लीफ, यू आर नॉट पेंटिंग लेमन, you are not painting candle, you are just putting correct colors on your canvas, on your panel. तो बहुत लोग जब स्टार्ट करते हैं वो इसकी अहमियत भूल जाते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। एंड जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ, हमारी कैंडल जैसे दिखे। हम ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है कि वो कैंडल है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी एग्जैक्ट कैंडल बना दें, पूरा एग्जैक्ट लेमन बना दें। बट ऐसा नहीं होता रियलिज़म में, आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ ट्रिक दैट ह्यूमन माइंड प्लेज विद अस, बट यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट टू पेंट रियलिज़म। तो आप जब फर्स्ट लेयर पेंट कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए शेडो की जगह शेडो पेंट करिए और लाइट की जगह लाइट पेंट करिए। डोंट ट्राई टू मिक्स एवरीथिंग। like now I am painting jar, so this is made of glass, okay? अगर कोई बिगनर इसको पेंट करने की कोशिश करेगा तो वो सब वाइट कर देगा। वाइट कलर से कोने पे बैकग्राउंड के पास ना कोने में वो लकीर डाल देगा कि हाँ, ये कांच का ग्लास है तो ये वाइट दिखता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसमें शेडो पेंट कर रही हूँ, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट पेंट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कोने में लाइन से वाइट कलर नहीं बना रही, और जहाँ पे अगर आपको वाइट कलर दिख रहा है वो एक्चुअली वाइट नहीं है, उसमें ब्राउन, ब्लू और वाइट तीनों मिक्स होके लाइट कलर बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखिए। My camera was like out of battery, so I was not able to paint the leaf, but I got a chance to paint some few leaves, so I'm going to explain you. तो जो लीफ मैं अभी पेंट कर रही हूँ वो कुछ लीव्स के नीचे है, तो उस जगह पे ज़्यादा शेडो है, इसलिए वो लीफ का पार्ट आपको डार्क दिख रहा है और जो उससे पीछे वाले लीव्स हैं वो आपको थोड़े से ब्राइट दिख रहे हैं। तो मैंने जैसा बोला कि आई नो लीफ हमें ग्रीन कलर का दिखता है, बट जब आप रियलिज़म पेंट कर रहे हो तो आपको ये भूल जाना है कि लीफ इज़ जस्ट वन ग्रीन कलर। उसमें बहुत सारे शेड होंगे, उसमें वाइट हो सकता है, उसमें येलो हो सकता है, उसमें ग्रीन हो सकता है, उसमें कोई भी कलर हो सकता है जिसका उस पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो यू हैव टू फॉरगेट दैट दिस इज़ ओनली ग्रीन, दिस इज़ ओनली वाइट। आपकी पेंटिंग में लाइक इमेजिन you see one white candle, so you have to forget that this is only a white candle. That white candle will have gray value in it and maybe blue or maybe whatever is reflecting on it. I wanted to paint this still life from life, like everything should be on the table and I'm painting it right next to me. But then I realized that the color of lemon will get changed and the color of leaves also. Some part of the leaves will turn more yellow because it will take many days for me to complete this still life. And I took the decision that I'm going to take some reference picture myself. Let me show you some of the reference pictures that I took. Because of many edit effects and many Lightroom presets, what we do is we take a picture and we saturate it so much.
So did you notice that in my reference picture there is no saturation, there is no highly edit, it's very simple. So what I did is when I was taking the picture, I tried to set up everything in my camera itself so it captured the picture what I'm seeing in the real life. So the reference material that I got, it was naturally very close to what I was seeing with my own eyes, so that I don't have to edit it and I don't have to make much changes in it. Because personally when I paint realism, I don't like to put artificial intelligence or artificial effects in my reference picture, because it is very different from what our eyes see in real life. I accidentally broke my palette, so right, yeah. So here I got new palette and I'm going to like shift the colors on this palette. तो मैंने फर्स्ट लेयर को कुछ दिन सूखने दिया, लाइक फॉर ऑयल पेंटिंग यू हैव टू लेट इट ड्राई फॉर फ्यू डेज़. उसके बाद मैं सेकेंड लेयर की तरफ आई तो आई स्टार्टेड टू गिव सम रीटचिंग टू माई पेंटिंग. So as I said, don't try to do over blending on first layer, because in the second layer you can actually come back and blend and fix things, fix your color value, fix if any shape is out of the real shape. तो आप सेकेंड लेयर में आके एक्चुअली ठीक करना शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू गिव मोर डेप्थ टू द पेंटिंग. उसके बाद मैंने कैंडल होल्डर को पेंट करना शुरू करा. उसमें जो जो कलर थे वो यूज़ करे, उसको थोड़ा डिटेल्स दिया बिकॉज उसका शेप थोड़ा आउट ऑफ फोकस था पेंटिंग में. एंड उसके बाद मैंने कैंडल्स पे सेकंड लेयर में डिटेल्स दिए. तो बेसिकली मैं पूरी पेंटिंग पे सेकंड लेयर कर रही हूँ और मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँ. इस स्टेज पे भी ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं चाहिए हमें. एक्चुअली हमें पूरी पेंटिंग में ये ओवर ब्लेंडिंग अवॉइड करनी है, लेकिन मतलब ये है कि आप इस स्टेज से कुछ कलर्स इकट्ठे ब्लेंड करना शुरू कर सकते हैं जैसे आपको पेंटिंग में दिख रहे हैं, मतलब मिड टोन्स. इस लेयर में भी अवॉइड टू कीप लाइक प्योर वाइट अवे. डोंट यूज़ प्योर वाइट एट ऑल. आप कभी भी प्योर वाइट पेंटिंग में यूज़ नहीं करेंगे. अगर आप ऐसा करेंगे तो इट विल लाइक टेक अवे लाइफ फ्रॉम योर पेंटिंग. यू नो व्हाट आई मीन. When you paint realism, your painting have some life in it. तो अगर आप प्योर वाइट यूज़ कर रहे हैं तो it takes away some life. Okay, so for a while I'll leave you with the music and let you enjoy some painting video without me talking. Okay, so now I left my second layer also to dry like for few days, but then I came back for third layer. But before that I did oiling out. So if you don't know oiling out, I'll try to make detailed video on it later, but basically I'm using Gamsol for this process. अब मैंने अपनी थर्ड लेयर पेंट करना शुरू करा. तो इस लेयर में मैं डिटेल्स प्लेस करूँगी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं पे हाईलाइट है, कहीं पे प्योर वाइट यूज़ हो रहा है, बट स्टिल आई वांट यूज़ प्योर वाइट. आई ऐड सम ब्राउन और ब्लू टू इट, व्हाटएवर द रिफ्लेक्शन इज़ फॉलिंग. तो बेसिकली नाउ you can blend a little and put highlight and details and make some lines if you want, but still even in third layer you should try that you don't mess up so much. तो इसमें भी आप कोशिश करिए कि ज़्यादा लकीरें मत खींचिए, थोड़ी सी ही डिटेल दीजिए. अपने लैपटॉप में फ़ोटो को जूम मत करिए, जो आपको दूर से दिख रहा है सिर्फ उसी का ही डिटेल देने की कोशिश करिए.
तो जैसे कि मैं फैब्रिक पेंट कर रही हूँ, लेकिन फैब्रिक में मैं एक एक लाइन बारीकी से नहीं बना रही। मुझे दूर से दिख रहा है हाँ इस जगह ब्राउन है, इस जगह ग्रीन लीफ है फैब्रिक पे, तो मैं बस उसको जल्दी जल्दी लूज़ ब्रश स्ट्रोक में ही कर रही हूँ। लेकिन मेरी कलर वैल्यू जैसा मैंने बोला वो बहुत एक्यूरेट है, और मैं यहाँ पे भी ओवर ब्लेंडिंग करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट में मैंने पेंट किया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा, क्योंकि अगर मैंने हल्का सा भी ब्लैक के साथ मैसअप करा तो पूरी पेंटिंग ख़राब दिख सकती है। तो ब्लैक एक्चुअली मैंने बनाया है थोड़ा सा रेड यूज़ करके, बिल्कुल लिटिल बिट, एंड बेसिकली ब्राउन और ब्लू कलर यूज़ करके। मैं कभी भी आजकल प्योर ब्लैक नहीं यूज़ करती हूँ, मैंने छोड़ दिया है प्योर ब्लैक यूज़ करना। तो मैं ब्राउन और ब्लू से ही आजकल ब्लैक बनाती हूँ। तो वो कलर लेके मैंने जहाँ पे लाइट ज़्यादा थी वहाँ पे थोड़ा सा टाइटेनियम वाइट डाला है, और वहाँ पे लाइट पेंट करा है, और जहाँ पे शेडो ज़्यादा थी वहाँ पे ब्राउन ज़्यादा डाला है, और डार्क ब्लैक पेंट करा है। इस तरीके से बैकग्राउंड भी ख़त्म हुआ एंड आवर पेंटिंग इज़ फिनिश्ड। Anyways, still life painting was a lot of fun for me. I have painted this for the first time. But I hope you guys liked the video, and I hope what I shared with you, it was helpful. If it was helpful, please make sure to share and subscribe, and make sure to like the video if you like it and it was helpful, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.